These are the early warning signals by the RBI. RBI had issued 45 signals that bank have to see, and also RBI asked to banks, you can also add your own signals. आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो, and from these signals you can check it whether there are some weakness into these accounts, advance accounts, or some wrong things are doing into this loan or advance account, which can go for the fraudulence. And if these signals are there, you can red flag these account. आप उसको red flag कर सकते हो. And auditor also to report into the LAFAR. ऑडिटर को लफार में रिपोर्टिंग करनी है कि वेदर देयर आर एनी अकाउंट जिसको बैंक्स ने रेड फ्लैग नहीं करा, बट यू थिंक इट्स द रेड फ्लैग अकाउंट्स, उसकी भी आपने रिपोर्टिंग करनी है. तो कौन कौन से 45 हैं विच आर द अलर्ट फॉर द बैंक्स? तो दीज आर द वार्निंग सिग्नल्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स. कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज डिफॉल्ट इन पेमेंट टू द बैंक्स, कि अगर पेमेंट ही नहीं कर रहा, या फिर सन्डी डेटर्स की, या फिर कोई और स्टैट्यूटरी बॉडीज उनकी पेमेंट नहीं कर रहा, एंड चेक्स जो भी हैं उनके बाउंस हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल कोई इनकम टैक्स ऑफिसर को मतलब पेमेंट करिए आपने इनकम टैक्स या जीएसटी की, चेक बाउंस हो रहे हैं, या फिर अपने बैंक्स की पेमेंट है उसका चेक बाउंस हो रहा है, या कोई डेटर्स है उसका चेक बाउंस हो रहा है, देन ऑन द हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, देन यू हैव टू सी क्या बेसिस क्या है. Then raid by the income tax, sale tax, central tax, excise duty official. Then frequent change in the scope of project, frequently change कर रहा है projects को. Then जो insurance policies है, या तो under insured है या over insured है. Then invoices devoted to the 10 and other details. Then collateral securities, जो आपने securities provide करी है उसके title में disputes है. Then costing of the project, जो project basis पे आपने project loan लिया है उसकी value is very high with comparison to the standard cost of installation of the project. Then funds, another one is funds coming from other banks to liquidate the outstanding loan amount. Then next is foreign bills, कोई foreign bills remaining outstanding, उसकी payment outstanding for long term, मतलब काफी टाइम से outstanding है, and these are the tendency कि उसकी काफी टाइम से पेमेंट ही नहीं कर रहे. एंड देन ऑनर्स क्लोज इन इशू ऑफ बीजी, एलसी, स्टैंड बाई, लेटर ऑफ क्रेडिट. देन इन मर्चेंटिंग ट्रेड, इंपोर्ट, लेग नोट रिसीव, नोट रिवेल्टेड बाय द बैंक, रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द बोरोअर. हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ यू वांट टू विजिट द गोडाउन, द फैक्ट्री, और वो आपको टालमटोल कर रहा है, नहीं आज नहीं, कल, नेक्स्ट टाइम, फैमिली फंक्शन, सम अदर थिंग, देन यू हैव टू थिंक देयर आर समथिंग. देन delay observed in payment of outstanding dues. Financing the union, कोई फाइनेंस कर रहे हो, कोई दिल्ली में बैठा है फाइनेंस कर रहा है आगरा या फिर जयपुर, तो दैट यू हैव टू सी. Claim note acknowledged as debt high, frequently invocation of BG and development of LC, funding of the interest by sanction, additional facility कि आपको इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए एडिशनल लोन चाहिए. देन सेम कोलेट्रल चार्ज टू नंबर ऑफ लेटर्स, जो आई टोल्ड यू इन वन केस उसका डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे, तो माइट भी उन्होंने किसी और बैंक से भी, आजकल तो सरसाई में डिटेल्स आपको मेंशन करनी है, बट आपने सरसाई में डिटेल नहीं मेंशन कर दी और उसने कहीं और से भी लोन ले लिया, then there will be the problem. Concealment of certain vital document like master agreement, insurance cover कि आपको documents ही नहीं provide करे, then also it's the alert for the bank. Floating front associate company by investing borrowed money, जो मैंने भी अभी आपको बताया था कि किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं सारे एंड यूज यू हैव टू चेक. रिडक्शन इन द स्टेक ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर, अपना जो वैल्यू है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, मेरी 45%, 90%, 80% है उसको सेल आउट कर रहे हैं. देन रजिस्ट्रेशन of the key personnel and frequent change in the resignation of the key personnel means आपका जो key personnel है, board of director, MD, CEO, CFO, frequently change हो रहे हैं in the management level, then also see it's the dangerous sign. Then substantial increase in unbilled revenue year after year. Then next is large number of transaction with interconnected company and large outstanding from such companies. Significant movement in inventory disproportionately higher than the security in turnover. Then significant movement in receivable and the higher than the growth in turnover. These all are the 45 points that you have to check. These are the alert for the bank. तो इसको भी आप एक बार गोवर थ्रू कर सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो, so that when you are doing the audit, like significant increase in working capital borrowing as percentage to turnover,
कि टर्नओवर आपकी इंक्रीज नहीं हुई बट आप अपनी वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हो। देन क्रिटिकल स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट, किसी क्लाइंट का आपकी स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट है आपकी किसी बोरोवर्स की, दैट यू हैव टू चेक which are the critical issues auditor has mentioned, then increase in the fixed assets विदाउट कोरस्पॉन्डिंग, जैसे आपने वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर दी या फिक्स एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी, देन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीज इन बोरोइंग डिस्पाइट ह्यूज कैश, जैसे कई बार बुक्स में आपको कैश मिलता है 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख, 85 लाख, कई कई जगह तो 1 करोड़ रुपीज आपका कैश इन हैंड। when they are applying for the loan, how can they say that कि मेरे पास इतना कैश है, मेरे को लोन की क्या जरूरत? It means bank fund you are using for some other purpose. And then liability appearing in ROC search report, not reported by the borrower in its annual report, substantial related party transaction, material discrepancy in the annual report, significant inconsistency with the annual report, then poor disclosure of materiality adverse information and no qualification by the statutory auditor, frequent change in accounting period and or accounting policies, regularly accounting policy change कर रहा है, frequent request बार बार फोन कर रहा है बैंक मैनेजर को, कोई लोन प्रोवाइड करिए, लोन प्रोवाइड करिए डिफरेंट पर्पज को, इट मींस ही नीड्स फंड्स, तो कुछ इश्यूज है। देन मूवमेंट ऑफ वन अकाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर, फ्रीक्वेंटली बैलेंस ट्रांसफर कर रहा है वन बैंक टू अदर बैंक अकाउंट, frequent ad hoc sanctions, not routing of sale proceed through bank, this is also important। जो आपकी सेल प्रोसीड है उसको अकाउंट चेक करना है, अकाउंट्स में कितने आपके क्रेडिट्स हैं, कि आप जो सेल्स कर रहे हैं इट शुड बी रूटेड थ्रू द दिस बैंक अकाउंट। अगर नहीं रूट हो रही तो यू कैन चेक जीएसटी रिटर्न कितनी उसकी टर्नओवर है, या कोई और अकाउंट तो इसने ओपन नहीं करा किसी और बैंक में। देन LC is issued for local trade related party transaction, high value RTGs payment to the unrelated parties, heavy cash withdrawal in loan account, बहुत ज़्यादा उसने withdraw करा है। Then also some issues are there, non submission of original bills। So these are 45 points which are early signals for the banks. The bank have to decide, these are the warning signals for the banks which have been issued by the RBI. Even bank can also add some others and then can red flag like that.